morning student. Today we will start our next chapter of English grammar is articles. What is articles? A, an, and the are called articles. There are two kinds of articles, indefinite articles and definite articles. So, what is indefinite articles and what is definite articles? Here, look at here. A and an are indefinite articles. A और an जो हैं वो indefinite articles हैं and the is called definite articles और जो the है वो definite articles है. Why we call a and an is indefinite articles? Because it does not point out any definite person or thing, and the is definite because it's point out some particular person or thing. A और an जो है वो indefinite है because ये किसी particular person और thing को point out नहीं करते हैं और the जो है वो particular person और thing को point out करता है, इसलिए the is definite articles. Here is article a and an means one. A and an are placed before the countable noun in the singular number. यानी कि a आर्टिकल्स और n आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, हियर इज़ द एग्जाम्पल: अ गर्ल, अ डॉग, एन अर्न, एन ऑस्ट्रिच. तो दीज आर सिंगुलर. तो दैट्स वाई वी एड a with these nouns, but we don't use a और n before the uncountable noun. uncountable noun से पहले हम इसका यूज़ नहीं करेंगे. look at here, give me a salt. a salt, हम salt को काउंट नहीं कर सकते. जो salt है वो uncountable है, तो हम a salt के आगे नहीं लगाएंगे. okay, now use of a. where we use a? We use a before the words that begins with consonant sound. Example: university, unit. Here is an example: I need a pen. A pen. Pen. The first sound of pen is p, and p is consonant. What is consonant? We explain it here. These are alphabets, English alphabet, and in English alphabets there are 5 vowels. These are vowels and rest of the alphabets are called consonant. So let's take example. B, boy. C, cat. The first letter of boy is B and B is consonant. Cat, C is consonant. So we add a with boy, a with cat. okay, is used with the sounds begins with consonant. Clear? Here we also write a one-eyed man, since o in one in pronounced as w in one, a consonant sound. Here is one-eyed man. वन ओ फर्स्ट लेटर ओ है बट ओ इज़ वॉवल, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ ए लगाया है क्योंकि वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है वो जो साउंड आता है फर्स्ट वो होता है डब्ल्यू का साउंड आता है. सो वी एड ए विथ वन. ओके, लुक एट हियर. वी राइट ए यूजफुल. वी राइट यूजफुल के साथ भी हम ए कॉन्सोनेंट का ए वॉवल का यूज़ करेंगे क्योंकि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है यो इज़ कॉन्सोनेंट. दैट्स वाई वी एड ए विथ यूजफुल. ओके, नाउ यूजेस ऑफ एन. एंड वेयर वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट्स बिगिन्स विथ वॉवल साउंड. वॉवल साउंड से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं. एग्जाम्पल्स: look at here, these are vowels. okay, and the sounds begins with vowel sounds. We add and with them. Look at here: apple, egg,
The first letter of apple is A. A is vowel. Egg. First letter of egg is E. E is vowel. So we add an. An. So remember these. The sounds begins with vowels. We add an with them. Okay. Now look at here. I saw an eagle at the zoo. So an eagle, the first sound of eagle is an. Look at here. I have an orange for breakfast. The orange, the first sound of orange is O. O is vowel. So we add an. Okay. One thing is remember, we also write an honest person. Honest के साथ भी हम an का use करेंगे because H is silent. We pronounce it as honest. Honest. First sounds of is O. So we add an. H is silent in this word. Okay. So students, you watch this video very carefully and try to understand the articles. Okay. Bye.